Good afternoon, ladies and gentlemen. Can you all hear me? Can you hear me there? So a warm welcome to you all, or should I say wet welcome? It continues to rain. I'm the MGGS Ops. I'm Major General Puneet Ahuja, in charge of the operations in Headquarters Western Command. On behalf of the Army Commander, Lieutenant General Manoj Kumar Katiyar, PVSM, UVSM, AVSM, I welcome you all here this afternoon. As you're all well aware, this year we've seen extreme climates. In the middle of July, we saw extreme climates in the areas of Himachal, where the Army was briefly used for restoration of the tracks and activities to restore communications and pull out people. 16th or 17th August in the areas of Kathua, including Basoli, we again saw incessant rains over there. Yeah, no, this is just an informal welcome. Brief will be in Hindi and English. So in 16th, 17th August, we saw in the areas of Kathua and Basoli where there was incessant rains. We again assisted in restoring communication, evacuating people, and giving food and other assistance. 26th August, I think the entire region of Jammu and Punjab has witnessed extreme rains, and there have been extreme floods. The Army, along with the civil administration and the other paramilitary forces and other agencies, have all put in and gone into the act. We've gone on the overdrive and moved in to assist the people, assist the local administration and the civil administration. And I must confess that the feedback which comes from the people on ground, from the citizens, is overwhelming and humbling. During these last few days, our soldiers, our pilots have taken a great amount of risk. They've gone beyond their normal routine and taken risks in assistance of rescuing people. And I'm happy to say that all of you have covered those stories so beautifully. Hepters landing on rooftops in the middle of fields full of water, pulling out the needy, rescuing babies and ladies, etc. We continue, even as we talk today, we continue to engage in these operations in assistance of the administration and in support of the citizens of India. Now I'll ask my Colonel IW, Colonel Arora, to give you a detailed brief on the aspect. After that, me and my team will be happy to answer questions if you have any. And then I'll request you all to join us for a cup of tea, and hopefully the Army Commander will come and have a personal interaction with you all. Okay? Come. Iqbal. I'll first give out in English and then Hindi. Jai Hind. Western Command at the forefront of flood relief operations in Jammu, Punjab and Himachal Pradesh. The Western Command of Indian Army has launched extensive flood relief and rescue operations in Jammu, Punjab and Himachal Pradesh, demonstrating swift response, meticulous preparedness and seamless coordination with civil agencies. Operations commenced on 16th-17th August 2025 and an assessment of the developing flood situation was taken, with troops, engineers, medical detachments and aviation assets mobilized at short notice to safeguard lives and restore essential services. Flood relief columns were fully prepared, trained and equipped to undertake HADR missions, and on receiving requisitions from the civil administrations, these columns were swiftly deployed across affected areas. Aviation assets, both of Indian Army Aviation and further supported by Indian Air Force, have been flying sustained sorties, ensuring timely evacuation of stranded civilians and aerial delivery of critical supplies. A flood control and water level monitoring cell has been established at each headquarters, functioning round the clock to monitor the water levels across major headworks, including Bakra Nangal Dam, Ranjit Sagar Dam, and all other critical points.
Operations are being conducted in close coordination with the civil administrations, NDRF and SDRF. This integrated approach ensured optimal use of resources and timely assistance to affected populations, reflecting the nation's resilience and unity during crisis. This proactive measure has enabled timely deployment and response to emerging threats. A total of 47 columns have been mobilized, comprising personnel from engineers, medical detachments, and communication teams, also in addition to the main rescue teams. 20 aircrafts, including advanced light helicopters, reconnaissance and observation helicopters, Mi-17s, and a Chinook are engaged in round-the-clock missions and have flown over 250 hours so far. More than 5,000 civilians and 300 paramilitary forces personnel have been rescued from inundated areas. Approximately 21 tons of relief material, including food packets, medicines, and essential commodities have been delivered on ground and through aerial drops to all the cut-off locations. On 27th August, communication teams laid more than 2 kilometers of optical fiber cable, restoring mobile connectivity and enabling smooth coordination of relief measures. Subsequently, Army engineers on 29th of August successfully constructed a Bailey Bridge at Jammu Tawi within 12 hours, restoring a vital lifeline for the city. There were challenges wherein the river enclaves along Ravi and Chenab rivers had got inundated. This is the area between river and the border fence. Hence, own troops, including BSF personnel and civilians in these inundated villages, were evacuated, leaving behind adequate strength to ensure the security of the region. On 30th August 2025, Lieutenant General Manoj Kumar Katiyar, Param Vishisht Seva Medal, Uttam Yuddha Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Army Commander Western Command, visited forward areas to review relief measures. He interacted with troops engaged in rescue missions and personally assessed distribution mechanisms. The Army Commander commended the synergy between Army, civil administration, police, and other agencies, underscoring that such integrated efforts are vital in overcoming challenges of this magnitude. Western Command reiterates its unwavering commitment to stand shoulder to shoulder with the people and civil authorities. Relief efforts will continue relentlessly with the singular aim of rescuing every stranded individual, restoring essential services, and facilitating an early return to normalcy in the flood-affected regions. The Indian Army, in partnership with civil administration and sister services, reaffirms its dedication to the national vision of service before self, ensuring that no effort is spared in bringing relief, reassurance, and recovery to those impacted. Jai Hind. अब मैं हिंदी में ये ब्रीफ कवर करूंगा। जय हिंद। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने जम्मू, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक राहत एवं बचाव अभियान चलाए हैं। इन अभियानों में त्वरित प्रतिक्रिया, सुनियोजित तैयारी और नागरिक प्रशासन के साथ बेहतरीन समन्वय का परिचय दिया गया है। 16-17 अगस्त 2025 से ही स्थिति का आकलन कर इंजीनियर टुकड़ियां, चिकित्सा दल और संचार साधन एवं सेना के हेलीकॉप्टर्स अल्प सूचना पर ही तैनात कर दिए गए थे, ताकि जनजीवन सुरक्षित किया जा सके और आवश्यक सेवाओं की बहाली सुनिश्चित की जा सके। फ्लड रिलीफ कॉलम्स यानी कि बाढ़ राहत कॉलम पहले से ही प्रशिक्षित, सुसज्जित और तैयार थे। नागरिक प्रशासन के अनुरोध पर उन्हें प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत भेजा गया। भारतीय सेना के एविएशन संसाधनों के साथ साथ भारतीय वायुसेना ने भी लगातार उड़ानें भरकर फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला और आवश्यक राहत सामग्री इन स्थानों तक पहुंचाई। महत्वपूर्ण हेडवर्क्स जैसे भाखड़ा नंगल और रंजीत सागर एवं अनदर बाकी क्रिटिकल पॉइंट्स में पानी के स्तर को मद्देनजर रखने के लिए प्रत्येक हेडक्वार्टर में एक फ्लड कंट्रोल,
एवं वाटर लेवल मॉनिटरिंग सेल स्थापित किया गया है, जो कि 24 घंटे कार्यरत है। सेना, नागरिक प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ मिलकर राहत कार्य कर रही है, जिससे संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग और समय पर सहायता संभव हो सकी है। अब तक कुल 47 कॉलम राहत कार्यों में लगे हैं, जिनमें इंजीनियर, चिकित्सा और संचार दल भी मुख्य दल के साथ साथ शामिल हैं। 20 हेलीकॉप्टर्स, जिसमें कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, रिकॉनेसेंस एंड ऑब्जर्वेशन हेलीकॉप्टर, मी-17 और चिनूक शामिल हैं, लगातार मिशन पर लगे हैं और अब तक 5000 से ज्यादा नागरिकों को एवं 300 से अधिक अर्धसैनिक बलों के जवानों को सुरक्षित अपने स्थानों तक पहुंचा चुके हैं। लगभग 21 टन राहत सामग्री, जिसमें खाद्य पैकेट, दवाइयां और आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं, सड़क और हवाई मार्ग से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाई गई हैं। संचार टीमों ने 2 किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाकर मोबाइल नेटवर्क बहाल किया, जिससे राहत कार्यों का समन्वय और भी तेज हो पाया। इंजीनियर्स ने जम्मू तवी में रिक्विजिशन आने पर 12 घंटे के भीतर एक बेली ब्रिज बनाकर शहर के लिए जीवन रेखा को बहाल किया। एक मेजर चैलेंज जो कि सेना के समक्ष था, वह था बॉर्डर फेंस और नदी के बीच के इलाके, जिन्हें ऑनक्लेव्स कहा जाता है, रावी और चिनाब नदियों के किनारे बसे इन गांवों में राहत पहुंचाने का। सेना ने रावी और चिनाब नदियों के किनारे बसे इन गांवों में बाढ़ आने से प्रभावित हुए सेना, बीएसएफ और नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त बलों को वहीं पर तैनात रहने दिया गया है। 30 अगस्त 2025 को लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना कमांडर पश्चिमी कमान ने अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया और उन्होंने राहत कार्यों की समीक्षा की, सैनिकों से बातचीत की और नागरिक प्रशासन एवं पुलिस के साथ समन्वित प्रयासों की सराहना की। पश्चिमी कमान आप सभी को पुनः आश्वस्त करता है कि भारतीय सेना हर परिस्थिति में नागरिकों और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। हर फंसे हुए व्यक्ति को बचाना, आवश्यक सेवाओं को बहाल करना और प्रभावित क्षेत्रों में शीघ्र सामान्य स्थिति को लौटाना ही सेना का संकल्प है। सर्विस बिफोर सेल्फ की भावना के साथ भारतीय सेना राहत, विश्वास और पुनर्वास पहुंचाने के लिए निरंतर कार्यरत है। जय हिंद। Yeah, any questions? पंजाब का अलग, you have to figure separately, state wise? बताएं, yeah. आपको सुनाई दे रहा है? जी। आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है पंजाब को लेकर, तो मैं सिर्फ पंजाब के बारे में आपको बताऊंगा कि पंजाब में गुरदासपुर एरिया, अमृतसर एरिया, फिरोजपुर एरिया एंड कपूरथला एरिया, ये 4 इलाके में जनरली ये फ्लड का जो चैलेंजेस आया है। वहाँ पे अभी तक सिर्फ पंजाब में 4000 सिविलियंस के ऊपर हम लोगों ने उनका राहत किया है, उनको रेस्क्यू किया है। इसके अलावा हम लोगों ने पैरामिलिट्री फोर्स यानी कि बीएसएफ या सीआरपीएफ मिला के करीब 100 के ऊपर ट्रूप्स उनको रेस्क्यू किया गया है। Good afternoon, ladies and gentlemen. Can you all hear me? Can you hear me there? So a warm welcome to you all, or should I say wet welcome? It continues to rain. I'm the MGGS Ops. I'm Major General Puneet Ahuja, in charge of the operations and headquarters Western Command. On behalf of the Army Commander,
Lieutenant General Manoj Kumar Katyal, PVSM, UVSM, AVSM. I welcome you all here this afternoon. As you're all well aware, this year we've seen extreme climates. In the middle of July, we saw extreme climates in the areas of Himachal, where the army was briefly used for restoration of the tracks and activities to restore communications and pull out people. 16th or 17th August in the areas of Kathua, including Basoli, we again saw. Or as far as relief material is concerned, around close to 10 tons plus इतना रिलीफ मटेरियल्स हम लोग सिविल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कलेक्ट करके हम लोगों ने जो बाढ़ में प्रभावित लोग हैं उनको हैंड ओवर किया. कभी कभी एरियल ड्रॉप भी हुआ, कभी कभी बाय हैंड ऑन रोड किया. हेडवर्क्स टूटा और अभी जो सिचुएशन है वाटर लेवल की वो एक बार थोड़ा बता दीजिए क्या अलार्मिंग सिचुएशन है और माधोपुर स्पेसिफिक जो हेडवर्क्स टूटा उसके बाद. देखिए पंजाब में दो स्पेसिफिक डैम है या हेडवर्क्स है जिससे पंजाब का जो प्लेन्स है प्रभावित होता है. एक है हिमाचल में जो पौंग डैम है और एक जो आपने वेरी राइटली से माधोपुर. तो दोनों डैमों में अभी हिमाचल में भी बारिश हो रहा है. सो जो पानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बट जैसे जैसे बढ़ रहा है उनका भी एक मैकेनिज्म है जहाँ पे जो डेंजर लेवल दे मेंटेन, जस्ट डेंजर लेवल से पहले उनको थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ रहा है ताकि कैनाल्स डिस्ट्रीब्यूटरीज में पानी चला जाए. Yeah, you're talking about the border areas that he talked about, the enclaves, you know, the area ahead of the river and between the fence. So there has been certain damages to the fence along the boundary between India and Pakistan. Not only in Punjab, it's happened in the areas of Jammu also. A total stock with the BSF is being undertaken, where the fences got washed away. Some of the floodlights which are there with the BSF on the along the fence are not functional. Those are being restored. The tracks leading to the BOPs have also got affected. So the army is assisting in all of these aspects along with the BSF. That responsibility remains with the Border Security Force. Evacuating people where their stores or the personnel living and all they got inundated was also carried out. Yet security was given due importance. You can't leave the entire border unguarded. So they've left the adequate people to man the security measures, and the restoration will be done as and as the water also recedes. You have to put the fence back, you have to erect the fences, put barbed wires where they've been washed away. The exact figures are still being assessed on kitna damage hai, kitni fences hain. So that's how it is. So what is the overall assessment of the situation? Is it worsening or is it improving? How is it going? All of us are monitoring it day in and day out. I think the weather assessment, we are looking at better weathers ahead. There is rain, which today hopefully was the last of the large rains, but the forecasts are also changing. I'm sure all of you are also seeing the various weather forecasts. However, overall the levels I would say in the areas of Jammu have improved with the water levels receding. In the areas of Punjab, these rains which have happened in Himachal and Punjab, we are still looking at it closely, but the forecast predicts that there will be an improvement in the coming days. Currently, it is still being closely monitored in terms of levels of water, as was brought out by the Colonel just now. Since the situation in some districts of Punjab appears to be precarious at the moment, do you see further worsening in a couple of days? I won't call it precarious. In my assessment, the worst is over. In my assessment, the worst is over, but we still need to monitor it because, like I said, the weather forecast is changing fast. Rains in Himachal also get affected, have an effect downstream. So we are observing it very closely. Sir, that is from Republic TV.
Sir, for the next 24 hours also there has been a red alert all across the Himachal and 4 to 5 districts. Sir, water level, especially to talk about the water which is coming from the Himachal, is touching the boundary areas of the Bhakra Vyas. Sir, are the army prepared if any sort of danger touches the Bhakra? Anything? If anything happens for the Bhakra canal, something happens, The columns are in place, but we haven't received anything from the civil authorities which indicate a danger on the Bhakra per se. That is a major aspect which would be a warning. I mean, I don't think we've received any intimation or any danger as far as the Bhakra is concerned per se. Any other inputs we have from any other authorities? We haven't received as journal brought out. However, you got to understand that how we work is that for every area, our columns are earmarked. If a particular area near Bhakra Nangal, what you are talking about, our columns are earmarked, which are ready, which are right now also as we speak. They are providing somewhere assistance where it has been requisitioned by the state government. So we are ready. What kind of assistance would be required would be given by requisition, would be given by the state government. Then you got to understand that you are more aware than us. There are 2 more layers, the SDRF and NDRF. They are also closely monitoring with us, and this time it has been very heartening that there's been a close synergy between Army as well as the NDRF and the SDRF. So everything is being coordinated. As and when it comes, right now there's no precarious situation. सर अनमोल गुलाटी फ्रॉम न्यूज नेशन सर जैसे पंजाब की अगर बात करें पंजाब बॉर्डर स्टेट है और जो फ्लड सिचुएशन है फिरोजपुर फाजिल का ये बिल्कुल गुरदासपुर बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर से टच होता है तो यहाँ पर जो फ्लड सिचुएशन है अब ट्रूप सारे इस सिचुएशन को टैकल करने में लगे हुए तो क्या कोई सिक्योरिटी कंसर्न भी है और अगर इफ यस तो उसको कैसे मैनेज किया जाए? जो मैंने आपको पहले बताया कि सिक्योरिटी कंसर्न्स को मद्देनजर रखते हुए एक्टिविटी होती है। पहले तो बात होती है राहत देने की। हमारे हवाई जहाज गए हैं, दे फ्लोन इन क्लोज ऑर्डर्स विच इज नॉट एज पर प्रोटोकॉल्स, पर हम दूसरी साइड को बताते हैं कि हमारे हवाई जहाज जा रहे हैं। उसी प्रकार उनके भी हवाई जहाज जा रहे हैं, वो एमओ लेवल पर इंटीमेशन देते हैं कि हेप्टर्स आर बीइंग यूज्ड फॉर इवैक्यूएशन ऑफ पीपल वेरी क्लोज टू द बॉर्डर, लाइक आप लसियां ले लो या कहीं और भी ले लो, गुरदासपुर सेक्टर। So that exchange of information about air activity for evacuation of people is taking place on a regular basis. While we vacate our people, जो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे लोग जो तैनात हैं बॉर्डर पर सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए ही इवैक्यूएशन हो रहा है। There are people and place measures in place to ensure खाली करके नहीं आ रहे हैं। If you get the point, that वो एस्पेक्ट सिक्योरिटी का ड्यू इम्पोर्टेंस और क्रेडेंस दिया जा रहा है। जैसे आपने बताया कि वाटर मॉनिटर सेल एक स्थापित किया हुआ है, यानी पानी कितना आ रहा है, किस फ्लो में आ रहा है, उसको आप मॉनिटर कर रहे हैं। हालत क्या कुछ राहत बनी हुई है? डैम्स का लेवल जो है वो कम हुआ है? क्योंकि इस बार देखने में आया कि डैम्स से पानी कम छोड़ा जा रहा है, दूसरे इलाकों से जो खड्डे हैं, नदी नाले हैं, वहां से पानी बड़ी मात्रा में जो इफेक्टिव एरिया है वहां पर मार लगातार कर रहा है। तो ऐसे में बारिश जिस तरह से लगातार हो रही है, क्या पानी आना कुछ कम हुआ है, कुछ राहत की खबर है? See, if there is a specific डैम जिसके बारे में आप पूछ रहे हो तो उसका फिगर मैं निकाल के बता सकता हूँ, पर आपको नॉर्थ से साउथ में बताता हूँ। जैसे हम नदर्न मोस्ट हमारे लिए है चिनाब, तो उसके में राहत आई है। देयर हैज बीन अ रिडक्शन इन द वाटर लेवल। फिर फर्दर साउथ आते हैं, इनिशियली जैसे रंजीत सागर डैम था, उसके आगे शाहपुर कंडी और माधोपुर में हुआ है, उसमें भी थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। बट उसके फर्दर साउथ जैसे जहां पर हैं उसमें इट्स स्टिल फ्लोइंग इन अ टाइट सिचुएशन। सो इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक डैम यू वांट टू नो, वी हैव द डिटेल्स अवेलेबल। यू हैव द लेटेस्ट फिगर्स विद यू? या जो ये वाटर मॉनिटरिंग सेल है, इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ आपका डैम्स, बराजेस या हेडवर्क्स है, वहाँ पे जॉइंटली एनडीए में एनडीआरएफ एंड इंडियन आर्मी के जो जवान हैं वो लगातार
जो वाटर लेवल है उसको मॉनिटर करते हैं, जहाँ पे देयर इज अ स्पेसिफिक वाटर लेवल डेंजर मार्क। सो जो बराज या हेडवर्क्स अथॉरिटी है उनका ये एसओपी सॉर्ट ऑफ है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि डेंजर मार्क आने से पहले वो थोड़ा थोड़ा करके पानी, जैसे आपने बताया डिस्ट्रीब्यूटरीज या कैनाल्स, इसमें छोड़ते रहते हैं सो दैट किसी हाल में ये डेंजर लेवल क्रॉस ना करे। सो दिस थिंग इज बीइंग वेरी क्लोजली मॉनिटर्ड and necessary remedial measures are being undertaken as we speak. Any other question? क्या सिचुएशन है अभी? पानी लगातार उसमें भी बढ़ रहा है, किसमें? आने वाले से अगेन कहाँ पर? अगर गग्गर। Anything on गग्गर? आपने सही बोला है। This is downstream गग्गर में। डाउनस्ट्रीम, तो इसका एक इफेक्ट आ रहा है, जैसे जैसे ऊपर से पानी नीचे की तरफ आ रहा है तो अभी गग्गर में भी पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ा है। Not critical yet. But it is not critical. Sir, since we know that Punjab has been worst hit in last 4 decades because of floods, and we also know that army is known for dealing with any unforeseen conditions, but is it also first of your kind that you have dealt with, like dealing with this kind of situation, because it's like after 4 decades these things are happening? Okay. 4 decades is an interesting question. This has come from some of the villagers on ground. 1988 is what they say. Uske baad, after 1988, they've seen these kind of waters. It's not the first of its kind. There have been floods. Year before last also there were floods. So it's not the first time, and like we said, we prepare for it. And when he started, we prepared, because every year it is a drill in the army. We have our columns, and we prepare, we train, we have our equipment, we have our tests, our coordination with the authorities and NDRF, SDRF. At the grassroots level, these activities happen. And every year. Last year there was nothing, yet we had undertaken these activities. Second, with every passing year or every possible opportunity, the level of cooperation improves. Like he said, we've had the NDRF, the SDRF, the civil administration, and our columns all on a common platform to monitor, to share information, to be able to allocate resources so that we can better deal with it in a faster manner. Right? Sure. Anyone else? Last question? I'm available for Minister. I just want to know about the casualty. Could you please give a detail of the casualty district-wise? How many people have died? No, I won't have those figures from this side. I don't have the figures. No military casualty of the Indian Army is what I can assure you. Okay? Right. We'll now request you all to have join us for a cup of tea. Hopefully sometime we'll get together with you once again when we'll have a discussion on the 60th anniversary of the 1965 war. Maybe we'll send out a message if you're interested. Right. Thank you.